Yeah. So, hello everyone. To this is a special session on financial planning. As you all know, this is today's World Literacy Day. So, we wanted to impart some knowledge about financial literacy. So my first question is, why is like financial planning so important? Because people, they earn money, but they want to you know, basically they want to invest their money to achieve some goals in their life, like child education, retirement. So yeah, so why it's important? So, Sahil, the biggest challenge in today's time is like we could not able to differentiate between what is the required skills to required to perform any activity versus what you know exactly. So, since today is the literacy day, so I just start with before getting into planning discussion. What is the India standard is? So, in India, if you know to fill the deposit slip of the bank, okay, then it will be qualified as a financial literate person. And as per the data, it suggests like, I mean, it's a 2 year old data which suggests India's financial literacy rate is 17%, considering this is the benchmark. So we are living in a country where the financial literacy is not a part of our education curriculum, and that perhaps the reason we are one of the biggest saving country in the world but not the wealthiest one. So financial planning basically all about speaks to take up control of your finances. And what is the biggest change which has happened in the last 20 years is to which created a need of planning is mainly inflation and the interest rate. So in any of the economy, the wealth grow because of the two reasons. One, if that particular economy the inflation is low, which means that you are losing the less purchasing price. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कंट्री में 6% का इन्फ्लेशन है वर्सेस 3% के इन्फ्लेशन की जगह पे, तो आपके 100 रुपए की कीमत जो है अगले साल 94 रुपए हो जाएगी। अगर 3% का इन्फ्लेशन है 97 रुपए होगी, तो यू आर लूजिंग लेस। Whereas interest rate, if any economy interest rate is higher, it means that you are gaining more, यानी आपके फिक्स रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो मान के चलिए कि आप एक ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट 11-12% के हैं और इन्फ्लेशन 4% का है, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं जिस अगर देश की बात कर रहा हूँ तो दिस इंडिया अंटिल 2002 इंडिया इंटरेस्ट रेट यूज्ड टू बी अराउंड 12-14% एंड द इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी अराउंड 4%. So that is why our father and our grandfather never needed any kind of financial planning and any kind of planning in terms of managing money, and any kind of diversification in terms of investment. The second thing which has changed is changes in the aspirational value. You see, during our grandfather time or father time, their aspiration to buying a car, it's more was a need actually, and they used to carry a car for 10-15 years. Might be they bought a car at later stage of life, 40 साल 45 साल की उनकी एज थी तब. But today it is not a basically a normal want, it's basically created as a necessity. So as soon as I get into my first job, I want to have a car. So the requirement has gone up. I want to have a house as soon as I get married. I want to go for a vacation, international vacation, as soon as I started saving the money. So all these changes in the way we are living has created a need of the planning. If we does not plan well, then in that case there could be circumstances which can arise. Will not have a sufficient money at time of retirement, and due to lack of security in India, we might need to work longer, we might need to compromise the quality of life, we might need to depend upon our children. So all this thing has created a need of to have a better control of your finances, and it's the international standards which world follows. And I feel that from saving to wealthiest country, this would be the only journey where maximum middle class could able to take a control of your finances. You're on mute. Yeah. Yeah, so I wanted to add, how can people do financial planning? Like, what is the process? So books has written a lot. I mean, there are few books like Rich Dad Poor Dad,
Psychology with the Money. They are great books to read about, to get more detail about the planning and part. And today, on this special celebration, I would recommend everyone at least start reading about these subject. But ultimately, when you consult any of the financial planner or any of the wealth manager, he follows a processes and he has a structure to create a customized financial plan for you. What is it that? So whenever it comes to making a financial plan, the first thing you does, you understand इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, मतलब पहला स्टेप ये होता है कि आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले क्या बोलता है, वो आपको जाके बोलता है कि अच्छा बताइए रात में क्या खाना खाया आपने, कोई आपको दवाइयां लेते हैं कि नहीं लेते आप, कोई क्या काम करते हैं आप। फिर उसके बाद वो आपके कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे टेस्ट लिख देगा, आप पहले टेस्ट करा के आइए। फिर वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी, देन ही वुड बी रिव्यूइंग, एंड फिर बेस्ड ऑन दैट ही वुड बी राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन और बोलेगा ये दवाइयां हैं, आपको ये सुबह शाम रात में ये खाने से पहले खाने के बाद, और आप मुझे वापस से 1 महीने बाद वापस कंसल्ट कीजिए। फिर वापस से प्रोग्रेस देखता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी भी कुछ इस तरीके से ही है। तो जनरली अभी तक जो हमारे एक्सपीरियंस रहे फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, वो बहुत ही प्रोडक्ट बाइंग एक्सपीरियंस है, जहां पर कोई इंश्योरेंस एजेंट है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई बैंकर है, आके सिंपली एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बिना कुछ जाने पहचाने या जान जरूरत समझे हुए। तो इट्स लाइक कि आप किसी फार्मास्यूटिकल दुकान पे गए और आपने बोला कि मेरे को पेट दर्द है, मैंने पेट दर्द की दवाई ले ली बिना किसी जानने पहचाने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो एक्सरसाइज, जो पहला स्टेप है वो यही है कि लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हु आर यू, आई मीन हाउ यू आर डूइंग करेंटली, आपके सिम्टम्स क्या हैं। एंड व्हेन you able to diagnose the situation, then you try to plot a possible prescription। ठीक है, तो उसमें ड्यू डिलिजेंस होगी, जो हम टेस्ट की बात करते हैं कि आपने अभी तक क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या सोच के किए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या परफॉर्मेंस है उनका, क्या आपकी वो जरूरतों से अलाइंड है या नहीं है, क्या वो आपके टैक्सेस से अलाइंड है कि नहीं है, क्या उनका रिस्क जो है वो आपके रिस्क एपेटाइट से अलाइंड है या नहीं है। तो ये जब मल्टीपल पैरामीटर्स को देखने के बाद यू राइट प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या हो गया कि भाई सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि बिल्डिंग इमरजेंसी फंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो आप पहला काम करते हैं वो एक अपना इमरजेंसी फंड बनाते हैं, जो कि आपके 6 महीने का एक्सपेंडिचर फंड है। ये क्यों होना चाहिए? जैसे आप किसी भी कंपनी में देखेंगे तो कोई भी कंपनी मर्जर एक्विजिशंस कब करती हैं, जब पहले वो अपनी करंट बिजनेस की लिक्विडिटी को मैनेज करके चलती हैं। मतलब कि भाई कल को खुदा ना खास्ता कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट आ जाए तो हमने 3 महीने 6 महीने अपने बिजनेस को सरवाइव करा सके, इसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। तो वैसे ही इंडिविजुअल लाइफ में कि जो पहला काम है आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं, जो कुछ नहीं आपका 6 महीने के ईएमआई और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स है। द स्टेप टू इज रिस्क प्रोटेक्शन। ओके, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या पॉसिबल लीकेजेस हो सकते हैं। तो उसी प्रकार इंडिविजुअल के लाइफ में जो ऑल जो जो मोस्ट पॉसिबल लीकेजेस हैं वो लाइफ और हेल्थ के रिस्क हैं। तो मैंने छोटा छोटा करके बहुत सारा पैसा बचाया, लेकिन एक हेल्थ का बड़ा क्लेम आया और मेरी सारी सेविंग्स एक झटके में जीरो हो गई। मैंने सोचा कि मैं 20,000 या 10,000 या 5,000 रुपए प्रति माह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अगले 20 सालों में अपने बेटे को एजुकेशन कराऊंगा, वो इंटरनेशनल जाएगा या डोमेस्टिक जाएगा, जो भी जाएगा उसमें, एंड समथिंग गोज रॉन्ग टू मी, देयर इज एक्सीडेंट, एनीथिंग कैन हैपन। सो टेक्निकली देखा जाए इन दोनों ही सरकमस्टेंसेस में आपकी रिक्वायरमेंट एलिमिनेट नहीं हुई है। बच्चे का एजुकेशन रहने ही वाला है, रिटायरमेंट रहने ही वाला है। तो रिक्वायरमेंट एलिमिनेट नहीं हो लेकिन सरकमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। तो अल्टीमेटली इट कैन पुट यू इन अ बैड सिचुएशन डिस्पाइट आप कमिटेड थे सेविंग्स करने के लिए। तो जो स्टेप टू है बिफोर अगेन स्टार्टिंग विद द इन्वेस्टमेंट, वो है रिस्क प्रोटेक्शन। कि आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने लाइफ और हेल्थ के सफिशिएंट कवरेजेस रखूं। तो लाइफ में मतलब टर्म इंश्योरेंस पहला, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। तो जनरली ये कितना हो सकता है? जनरली आपकी 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम, जो स्टैंडर्ड रूल है, बट इसके थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं जो
अगर आप किसी एडवाइजर से बात करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आइडियली कितना होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो गोल होता है, कि पहले आपने इमरजेंसी बनाया, फिर आपने रिस्क प्रोटेक्शन बिल्ड किया। द थर्ड पार्ट इज द गोल प्लानिंग, जहां पर आप ये बात करते हैं कि जितनी भी मेरी जरूरतें हैं उनके हिसाब से मुझे कितना पैसा जोड़ना चाहिए। देखिए, आज जब हम कमाते हैं तो हमारा सेविंग्स का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है कि हम उस पैसे को खर्च कर सकें, बट आज नहीं, फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को। क्योंकि कई सारे ऐसे खर्चे हैं जो हम अपनी सैलरी से पूरे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड एजुकेशन, इंटरनेशनल वेकेशन, बाइंग अ हाउस, रिप्लेसिंग अ कार, ओन रिटायरमेंट। ये खर्चे हम कभी भी अपनी सैलरी की कर सेविंग से, रनिंग सेविंग से नहीं मीट कर सकते। तो थोड़ा पैसा हम आज के खर्चों में यूज करते हैं, थोड़ा पैसा हम कल के खर्चों के लिए बचा के रखते हैं। तो गोल प्लानिंग एग्जैक्टली आपकी यही मदद करता है कि वो कौन कौन से फ्यूचर के खर्चे हैं जो मुझे फुलफिल करने हैं, और उसके लिए मुझे कितना पैसा सेव करना चाहिए, और वो प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगा कि किस पैसे, किस गोल के लिए मुझे अभी से सेव करना चाहिए, किस गोल को मुझे कम करना चाहिए, किस गोल को मुझे डेफर करना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप होता है जो आपका एडवाइजर आपको हेल्प करता है फिगर आउट करने के लिए, और फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लिंक करता है। तो जनरली एक थ्योरी है कि आप अभी तक जो तरीके देखे गए हैं वो है बहुत रैंडम इन्वेस्टमेंट्स के, आप बहुत रैंडमली इन्वेस्टमेंट्स को बाय करते हैं। बट ये गोल बेस्ड अप्रोच आपको मदद करता है कि आप सही गोल के लिए सही इन्वेस्टमेंट बाय करें। जैसे मैं इसको हमेशा एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इंडिया से लंदन जाना है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं। आप बाई प्लेन जा सकते हैं, आप बाई रोड जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। वर्सेस आपको अपने पड़ोस की किराने की दुकान में जाना है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, और अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो शायद आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे इन बोथ द केसेस? तो जनरली इफ आई हैव टू गो टू लंदन, द मोस्ट एफिशिएंट वे आई शुड गो बाय अ फ्लाइट। अगर मुझे बाजू की किराने वाली दुकान पे जाना है तो द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन इज कि मैं पैदल जाऊं। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में गोल बेस्ड प्लानिंग आपको मदद करती है ये फिगर आउट करने में कि सबसे एफिशिएंट तरीका कौन सा है उस गोल को पहुंचाने के लिए, एंड दैट्स हाउ द प्रायोरिटाइजेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट गेट टेक केयर। फिर जो इसका चौथा पार्ट होता है वो रिटायरमेंट है, कि अल्टीमेटली ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स टाइम उनके जो एक्सपेंडिचर्स होते थे मंथली वो बहुत ही बेसिक होते थे। जैसे अगर मैं आज भी अपने घर की बात करूं तो जो हमारा घर का आज भी जो मासिक खर्चा है वो 20-25 हज़ार रुपए है जो मैं, हाँ, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। बिकॉज उसमें लाइफस्टाइल का जो कंपोनेंट है वो निग्लिजिबल है। दे डोंट गो फॉर वीकेंड डिनर्स, दे डोंट गो फॉर वेरी हाई एक्सपेंसिव शॉपिंग्स, है ना। दे डोंट मेंटेन और स्पेंड समथिंग ग्रेट ऑन द मेंटेनिंग लेविश लाइफस्टाइल। बहुत बेसिक नेसेसिटी है घर, घर का खर्च, घर का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वहां पर उनके खर्चे बहुत नहीं है। तो क्या होता था कि जब उन्होंने अपनी लाइफ के 20-30 साल कहीं पर काम किए, तो चूंकि उनका रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी कम है, तो उनके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पीएफ के बैलेंस से पूरे हो गए। तो मतलब रिटायरमेंट में जो उनको पीएफ और ग्रेचुइटी मिला वो पूरा। बट आज के केस में ऐसा नहीं है। आज के केस में लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, उसमें लाइफस्टाइल कंपोनेंट काफी है, और पीएफ के कंट्रीब्यूशन कम हो गए हैं पहले से। तो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि जो आपके पीएफ के कॉर्पसेस हैं वो शायद आपकी रिक्वायरमेंट का 20-30% हिस्सा हो, और वर्स्ट केस में 40%। इससे ज्यादा नहीं, हमने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं देखा। 90-95% केसेस में यही नंबर्स निकल के आते हैं। और हम 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन कंट्री हैं, तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, अनलाइक जो हम यूरोप और यूएस में देखते हैं। तो आप ही को वो 60 साल के लिए अपना पैसा बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो जैसा कि मैंने बोला कि इसके रिpercussion ये होंगे कि शायद आई एंड अप वर्किंग मोर, मुझे और काम करना पड़े 60 के बाद भी, मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या मुझे किसी से डिपेंडेंट रहना पड़े। और तीनों ही सर्कमस्टेंसेस कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। तो इट ऑलवेज बेटर कि आई शुड बी स्टार्ट प्लानिंग माई रिटायरमेंट, बिकॉज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपके वर्किंग के बाद भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बिकॉज यू विल हैव अ मोर टाइम टू एंजॉय द लाइफ। आज के टाइम पे 11-12 घंटे कॉर्पोरेट लाइफ में देने के बाद आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि आप एक
क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सके, आपके पास उस समय क्वालिटी टाइम होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पैसे भी हों उस क्वालिटी टाइम को एंजॉय करने के लिए, Yeah. रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट। तो ये 4 पार्ट हैं, और इसका जो लास्ट हिस्सा है कि जैसे हमने बोला कि फर्स्ट प्रिजर्वेशन, एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इमरजेंसी और रिस्क प्रोटेक्शन जो पार्ट काम करते हैं, प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। गोल्ड प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको एक्युमुलेशन में मदद करते हैं। लेकिन जो फिर तीसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आई मेक अ नॉमिनी टू माय वाइफ, व्हेन शी मेक्स द इन्वेस्टमेंट शी मेक्स अ नॉमिनी टू मी, बट वी बोथ go for a vacation together, movie together. If something goes wrong, family may not be aware of it, and now court will be deciding it who should be the guardian for a minor child. तो ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप ये सब प्लानिंग कर लें, इसका जो लास्ट लीकेज है वो ये है कि मैं क्यों ना अपनी विल को भी तैयार रखूं। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई लॉयर हायर करना है, कोर्ट में रजिस्टर करना है। आप एक सिंपल प्लेन पेपर में राइट मैटर लिख के अगर अपने लॉकर में रखते हैं, वो विल बी वैलिड है। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो हम बात करते हैं, और आज हमारा उद्देश्य भी यही है आप सभी लोगों को ये बताने का कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन की हम बात करते हैं और जैसा अभी तक समझा गया है वर्सेस जैसा होना चाहिए, उसमें बहुत 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 गैप है। और हम सभी लोगों को आगे बढ़ के अपने अपने फाइनेंसिस की जिम्मेदारी और इसकी समझ लेनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इन लाइफ एनीथिंग विच कैन अफेक्ट यू आफ्टर योर हेल्थ वुड बी योर वेल्थ। Yeah, that is correct. Yeah, yeah. So that's a very, very good detailed answer. So I just so like my next question is like how can we maintain a balance between our savings and lifestyle? Because हम लोग सेविंग्स कैसे करें एंड जो हमारी लाइफस्टाइल में जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, सो हाउ कैन बी बैलेंस दैट? देखिए जनरली क्या होता है कि एक्सपेंडिचर मेक्स यू हैप्पी, सेविंग्स इज बोरिंग। Okay, and unfortunately, the ecosystem of society is created in that way only. तो आप इसको ऐसे देखिए कि and I always give this example to everyone कि like when I go for an international vacation and I post on my Instagram and social media, I get more than 100 likes and comments and everyone is appreciating it. Okay, where nobody is bothered about to ask me how you could able to do that. आप कर कैसे लेते हैं हर साल वेकेशन, क्या प्लानिंग करते हैं आप, कैसे ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। तो प्रैक्टिकली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वट एवर यू से, द सेविंग्स इज बोरिंग एंड एक्सपेंडिचर मेक्स यू हैप्पी। तो कोई ये नहीं समझ में आता कि आप सेविंग्स कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके टैबू है, आपको ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो द बेस्ट रूल विच आई फॉलो इज, एंड इनफैक्ट इट्स अ थ्योरी, जनरली हम लोग बात करते हैं कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो खर्चे कभी नहीं पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके खर्चे 100 रुपए हैं और आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो भी कम पड़ेगा आपको। जब आपकी इनकम 120 हो जाएगी, तो अगर आप खर्चे भी 120 कर लेंगे, तो सेविंग्स तब भी नहीं होगी। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु अर्न्स 5-6 लाख रुपीज पर मंथ and yet they won't have much savings. They struggle to save even a lakh rupees per month. Imagine it. Okay. तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि आप अगर आज सेव नहीं कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर्स में वुड बी अफेक्टिंग इट, एंड यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इट। यू सी, जब हम कॉलेज से निकलते हैं और जब फर्स्ट जॉब स्टार्ट करते हैं, तो जनरली हमारे जो खर्चे होते हैं वो कॉलेज टाइम पे 10-15 हज़ार रुपए होते हैं। बट जैसे ही हमें जॉब मिलती है 25-30 हज़ार रुपए की, तो हमें लगता है कि यार पीजी में रहना बहुत खराब है, मेरे पास इंडिपेंडेंट फ्लैट होना चाहिए, शेयरिंग फ्लैट होना चाहिए, इट इज डिस्टर्बिंग माई प्राइवेसी। तो हम अपने खर्चों को 15 से सीधे 20-25 लेके चले जाते हैं। जैसे ही हम लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड आर इनकम बिकम 40-50 थाउजेंड रुपीज, तो अचानक से आपको लगता है कि यार मुझे ना ट्रैवल करने में बहुत तकलीफ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आई शुड हैव अ कार। So then again I buy a car on a EMI and all this thing I does. Then further it will get increased, and if I become 1 lakh rupees guy, then तब तक by the time you will be getting married, तो आपको खर्चा उधर चला जाएगा। And even if your wife is working and both put together is earning 2 lakh rupees, तो आपको लगेगा कि यार इतने साल काम किया हमने तो घर ही नहीं खरीदा, फिर आपको घर खरीदने की याद आएगी। तो what you are doing it, you are changing your expenditure pattern as your income is growing up, and that's create a these kind of mess in the life.
What I always advise to you, you need to break your saving invest the income into a three part. One, if you are earning 100 rupees, spend 50 rupees on your household expenditure, 25 on your lifestyle, but balance 25 you should save for the long term. And when I say long term, it doesn't mean कि एक साल के बाद मैंने vacation कर लिया. It's basically I'm talking about the really long term investment. तो अगर आप ये बेसिक नियम भी फॉलो कर पाते हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी अहेड देन 90% ऑफ द ग्रुप इन इंडिया. सिर्फ इतना सा करने से भी आप इंडिया के 10% लोगों में आप क्वालिफाई कर पाएंगे. बट योर रेस शुड बी टू रिमेन इन दैट 2%, because world statistics says a 90% people hold the 10% of the wealth. Okay, so your objective should be, you should not be a product either, you should be commanding to buy the product. That's how the overall behavior changes we all need to do. Yeah, that's nice. So, it's so audience would you would all know that Fincart organized this. So I just wanted to give the last question to you. So what is the role of Fincart in managing money and educating people and helping them achieve their financial goals? See, ultimately, I take it in this way. When we started this business in 2013, we say we had a very clear motto, like we want to work on more on the solving the people real life goals problem rather than simply selling the product. So when we started this business, see, ultimately in this business, how the overall ecosystem works so far, the most of the good quality advisory has been exposed to HNI and ultra HNI who have a money to invest more than 5 crore rupees plus. Okay, and most of the middle class are exposed to get missold product, maybe just buying randomly product. No great implementation of financial planning exercise happens in that audience. Even if I look at today's the industry numbers, fintech players, so-called fintech things, if you look at the most of the fintech is making money by selling the product or giving the loans. So nobody is solving as such a great advisory. I mean, solving the individual's real life problem of goals, of efficient money management, or applying the great strategy. Either it is more product or it is more into a lending. And both the things are injurious to the financial health. अगर आप लोन ले रहे हैं तो भी वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खराब है, और आप रैंडमली प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भी आपकी फाइनेंशियली हेल्थ के लिए खराब है. इट्स लाइक यू आर गेटिंग योर ट्रीटमेंट डन थ्रू मेडिकल स्टोर. So I always recommend ki what we are trying to solve is we are trying to give a similar kind of experience and exposure what HNI ultra HNI experience in terms of advisory, following the same practices. Okay, and that is the problem we could able to solve by implementing this business model virtually. We could be the perhaps the initial company who has started this business virtually in 2013. Nobody used to speak about the virtual thing. We have done that. We don't meet client on this, and that perhaps the reason we could able to reach to this level. In 10 years we become a company of 100 plus employees, manages more than 900 crore plus assets, and the reach would be more than 200 cities due to virtual and no limitation traffic, including the NRIs. So we believe in solving the real life goal based problems, getting the customized done. That is why we made a provision of having a dedicated advisor who should be capable enough to address all set of financial queries. So be it your mutual fund, be it investment, insurance, tax, risk, anything you name it, currency, international, he would be the one who could able to address all query in one stop solution. So we are automating advisory, we are solving the advisory issues rather than simply selling the product, and that makes us a differentiate against the market and create uh, a better mark in the individual's lives. Okay, so we believe that the mark should be get created in the individual's life that can make you uh, relevant in somebody's life, because as I always say, after health anything which can take you back in your life would be your wealth or mismanagement of your finances. Yeah, that's a very detailed answer. So let's move on to there are some questions that people are asking. So one person is asking, how much would an average person earn to educate two children, get their marriage, and save for retirement?
See, sir, if I look at education perspective, I'll just give you the broad idea of it. If the child is planning to do the graduation in India, and if it is a non-technical graduation, then in that case, 10 to 15 lakh rupees is sufficient for the entire graduation. If it is a technical graduation, like I'm talking about engineering and B Pharma and all, then in that case, the cost could be around 30 lakh rupees. And this money is getting inflated by 10% year on year basis. That's one part of it. If it is a MBBS, then it varies. Government college doesn't have much fees of it, but the private can go approximately a 1 crore plus. So I always tell the minimum one should be planning it 30 lakh rupees at least in today's term. So if your child age is say 7 years, so technically by the time this goal will arise, the value will become 60 70 lakh rupees. So you should be saving at least 10 15,000 rupees, 20,000 rupees per month to get this goal achieved. If it is an international education, then it would be slightly higher. If it is US and UK, then it can go up to a crore or maybe 60 lakhs to 1 crore rupee, depends upon the course which we are opting. If it is another country like Asian country like Singapore and all, then it can go 40 lakh, 50 lakh as well. Okay, the Germany has the most least expensive country for the education, subject to German. So it's a very vibrant goal. But what I can say is your priority should be first retirement, then education. Okay, it doesn't mean that I'm asking you to not to educate your child. What I'm saying is education still you have an alternative to go for an education loan. For retirement, there is no loans are which are available. Okay. So you should not overboard on the child education, which was the biggest mistake I have seen that people does. There is a provision for the education loan. You can go with education loan, make your child responsible to prepaying it once he gets settled down, and don't compromise on the retirement money or balance the situation. So priority should be retirement first, then education. Second would be retirement plus 50% education fund. Third would be retirement plus education loan, 100%. So depends upon the potential of the saving you can does. You should be saving it. One more thing which I wanted to add in that many a time people who have a daughter who prefer to do Sukanya Samriddhi, I feel it's not a great idea to do that. I'll tell you why. Education inflation in India is 10%. Sukanya Samriddhi offers 8.4. तो टेक्निकली योर कॉस्ट मतलब आपके घर जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो 10% से बढ़ रहा है और आपने जो व्हीकल लिया है वो 8.4 से बढ़ रहा है. तो ये ऐसा हो गया यू आर ट्राइंग टू बीट ट्रेडमिल व्हाइल रनिंग ऑन द ट्रेडमिल. इट्स इम्पॉसिबल. ओके. तो मेक श्योर योर मनी विल वर्क इक्वली हार्डर देन टू बीट द इन्फ्लेशन. Yeah. So another question someone is asking is how can we invest in any product like gold mutual fund without knowing what happens to their future price? You see, nobody can predict the future price. Okay. What you also need to understand is what is the time you are giving to it. For example, mutual fund, it's a generic word. So mutual fund is a manufacturer of the financial product. It has a product of as like fixed deposit kind of product, or they have a market link equity product and sectoral fund also. So if you're investing in equity, then the time horizon should be 10 year, and then you can expect a return of around 12-13% on those periods. It may not come on a year on year basis, but it will come in a 10-year rolling period basis. But if you have a short term goal like medium 0 to 3 years or 3 to 5 years, then you should not be getting into a equity based investment. So that is why I use the line goal planning. When you start writing a goal, you have a clarity what a time horizon I'm chasing, and based on time horizon, that product selection can be get done. So all the goal which are 10 plus year should be equity. All the goal which are 5 to 10 year aggressive hybrid, all the goal which are 3 to 5 year conservative hybrid, anything which is less than 3 years should be in debt. No equity should get involved in these kind of product. Yeah. So another person is asking is my age is 25. What should be the investment plan for me? You see, when you are 25, I mean, that is the age where you should be aggressively investing in equity. But again, as I said, like if you have a need of the money in 1 year, 3 year,
then technically you should go for a conservative based investment, maybe a debt mutual funds or hybrid conservative hybrid mutual fund. These are the better alternative. So I always say whatever money you are saving, distribute medium term, long term, short term. At the age of 25, the biggest limitation would be the earning may not be that great, what we generally perceive. But start small, distribute into a multiple basket of it, so that you can utilize the money based on the requirement. Yeah. At what age we can take term insurance? I think as soon as you start earning. So if your Yeah. earning is more than 3 lakh rupees, you are eligible to take the term insurance, and it is well required, especially the family will going to depend on you even in the future. Okay, let you take it in this way. Maybe today my father is working when I am 22. You need to ask yourself, is they are going to depend on you after retirement? If the answer is come, then I should buy a term insurance immediately, because if something goes wrong to me in between, nobody is there or there is no replacement of mine to take care of his future requirement. Yeah. So another person is asking like how much Fincart charges for its financial planning services. So we are a distribution based company, and we get paid while from the manufacturer or the service provider. So there is no fees for the client, and it's the experience based services which we run. Okay, you get a financial plan done from our side. You understand from the financial planner or advisor, from our advisor. We have a team of more than 65 advisors. You understand them, and if you like and if you find that it's adding value for it, then you proceed with that. So it's experience based services which we are running. You experience it, and if you find it has a merit, you debate it, and if you find a merit of it, and then you should be proceeding with us. So we are absolutely sure that whosoever life we can add value, then only we want to onboard them. If we find it that something which we don't can't add value, we don't believe to onboarding it, because that relationship cannot be sustainable for a longer time horizon. Yeah. Another person is asking is what should be the asset allocation and investments in the portfolio for long-term horizon for a businessman. Sir, businessman has a very different planning, and I'll tell you, it they required more than that any retail individuals, salaried individual. Because what happened in salaried individual, still there is a certainty of the cash flow. In businessman, there is no certainty in the cash flow, and nobody want to compromise. Like we have seen in the COVID time, that suddenly the revenue becomes zero in the business. Okay, so in the businessman, I always tell it what you need to do it. You need to segregate your personal wealth and professional wealth. Okay, if you notice, like we have seen the example of Anil Dhirubhai Ambani and Vijay Mallya and all. A lot of example in that. The business has gone, but yet their own personal life has not changed. Why? Because there should be segregation between the personal wealth and professional wealth. So the first thing which one businessman should be doing it, they should be segregating between the personal wealth and professional wealth. And then the asset allocation would be depends upon again the goals. If you have any goals, based on that you should be choosing for it. If you don't have, then you should be seriously work on replacing your business income with the investment income. When I use replacing it, I doesn't mean that you should be shutting down the business. It means that your dependency to running the show of your house should move to your investment based income, not on your business income, which will make you free, which can help you to maintain the similar kind of quality of life. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब धंधा अच्छा चल रहा था तो गाड़ी हर साल बदल रही थी, और जब धंधा मंदा चल रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज नीड टू बी डन कि घर के रेनोवेशंस भी नहीं हो पा रहे. Those uncertainty you should be avoiding it, and which is a very common we have seen in most of the small businesses. It mainly happens we could not able to replace our professional income with the investment based income. Yeah. Another person is asking is I am 30 years old and had still not started with any investments. Which product is good for me and how can I get personal consultancy from Fincart? So I've started in this way. You should not invest in product. Fincard, you can simply go and register on the website. You leave your email ID there.
somebody from my team will call you, or you can drop in the chat box also. Somebody in my team will call you, and first we'll get your financial planning exercise done. Remember, products are merely a vehicle. Okay, there is nothing like, okay, somebody is asking like, say, what is EPF is good or FD is good. These are just a product. Okay, what will be going to fit in your requirement depends upon what is the need and what is the risk appetite and what is the understanding of the finances is. So you first your financial planning exercise done, get a clarity in the life, how you should be living the life. Like in yoga, I mean, it is get teaches us yoga is not about just doing exercise. It's about teaching to way living the life. Okay, so financial planning is not about investment and just buying another product. It's about a way to managing your finances, how one should be doing that, and then deciding it, what are the product I should be buying it. So similarly, just like in yoga, we decide later what are the asana I need to do, what are the practices I need to do. But it's more about way of living rather than simply just exercise. And same, a financial planning is more about getting a charge of your finances to knowing it what exactly I should be doing it rather simply just buying the product. So there is another question is, do we stick to physical gold or go for SGB instead of it? No, we prefer FGB because physical gold is only advisable when there is a marriage in the family and I need to physically gift that. Otherwise, for the investment point of view, SGB always makes sense because that's a great investment backed by government guarantee. It offers 2.5% returns, interest return, other than the gold appreciation, and returns are tax free. So you say you buy a one gold bar and you kept it in the locker, it is not giving you any interest. Okay. Whereas you bought one SGB, it is giving you 2.5% interest. Whatever the gold price going up, it is getting converted into capital gain. And after 8 years, if I sell, this return will be tax free. Whereas if I sell gold after 8 years, this will be a part of the capital gain. So for a value proposition perspective, always SGB make more sense to me rather than getting into a physical gold or maybe ETFs or even the mutual funds, gold mutual funds, I would say. Yeah. So another person asking, in today's world where it is best to invest in mutual funds or trading, I can see people earn a lot in trading. What is the pros and cons of trading and mutual funds? You see, anything which are speculative in nature, okay, does not create wealth. So in Bombay चलता है उसमें, बॉम्बे में ये बोलते हैं, people who do investment lives in Malabar Hills, people who do trading they lives in Malad. So trading is a more speculative activity which does not create wealth. Okay, it's a game of winning and losing. So somebody has to lose to make you win. Whereas investment, all can be a winner because you are participating in the businesses. So there is no shortcut of making money. There is no shortcut of trying the luck hard, because ultimately, if you go wrong, even two times in a 10 times, then also you lose the most of the money. So I would recommend to stay away from the trading because the average life in the trading is less than 6 months. Means anybody who start doing trading within a 6 month, more than 95% people stop doing that trading because they burn their finger and they don't get into it. Yeah. So there's another question is, if you already have an earning option, focus on that. Wait. Sorry. So someone is asking, apart from that, is it good to invest in small and mid cap rather than large cap? Please elaborate. Yeah, any day. I mean, see, what is the small cap, mid cap, and large cap is. So in India, first 100 company classified to be as a large cap. They are the most stable and the monopoly businesses in our country. Mid cap is the emerging company, the little smaller than large cap, which is next 150 companies, and 250 and above would be classified as small cap. That's the SEBI categorization which has done.
So it is always good to invest in mid and small cap, depends upon the valuation you're getting it. If you have a good risk appetite, means you can hold and you can see the volatility. आप 100 रुपया का 70 रुपया देख सकते हो होते हुए, और अगर आप घबराते नहीं हैं और आप होल्ड कर सकते हैं और उस समय पे और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं। आपको बिल्कुल मिड एंड स्मॉल कैप करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, and in developing nation the more opportunity get created in the mid and small cap. For example, in last 10 year, the largest return in the banking sector has not created by HDFC and ICICI, okay, or neither of Kotak. It is by the Bandhan, okay. It is by the AU Small Finance Bank. In last 10 year, the most CAGR in the IT space has been created by the L&T Infotech kind of companies. 5 years, sorry, my apology. So ultimately, what is Dixon Technologies? So what I'm trying to say around is emerging business always going to create more value because they have a good amount of runway to grow. So, but you also need to understand equity is all about long-term investment. The minimum time horizon should keep 10 years. Technically, you're gonna create a good amount of wealth on that for sure. Yeah. Someone is also asking, should I go for PF deduction from my office or shall I continue to invest in NPS? Which one is better? Any day NPS, anything which is market link and dynamic can help you to generate more returns, because NPS carries 75% equity, but you need to change. You need to make it auto mode on, sorry, auto mode stop, and get into a manual allocation and make equity allocation 75% in that. It's a compulsory lock-in product till age of 58. So you're gonna create more money. NPS expected return should be around 9 to 10%, whereas PF as of now it is 8 quarter. But naturally, as the India will continue to grow, the interest rate will go down. So in a long-term time horizon, a short-term time and medium-term time horizon, always NPS always be looking like a better alternative for you in terms of tax saving point of view. If you does not going to save tax on this, then naturally you should be getting into a more open-ended investments which are liquid in nature, dynamic in nature, and you have flexibility to change or switch over or make manage that money more efficiently. There's one interesting question. Someone is asking, is investing in land a good idea? So you see, land and real estate is the second growth asset class. So you look at it in this way. When it comes to a growth perspective, always a first asset class would be your equity, second would be the real estate, then your commodities, and the fourth would be your fixed income product. So ultimately, or last would be a savings account and then cash. So if the economy is growing by 12, 13%, GDP is growing at 12, 10, 11, 12, 13%, then your equity will deliver 12, 13% CAGR growth. तो आपके डेट का जो सॉरी रियल एस्टेट का जो रिटर्न आएगा 9-10% के आसपास आ सकता है, 8 से 10% के बीच में नॉर्मल इंडेक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो मैंने एक जमीन लिया था, वहां पर सडनली वो रोड बन गया तो वहां पर 10 गुना रेट हो गया। तो वो स्टॉक्स में भी हो जाता है, कोई कोई स्टॉक 10 गुना हो जाता है, तो दैट एक्सेप्शन कैन नॉट बी देयर। यू नीड टू टेक अ ओवरऑल बेंचमार्क, क्योंकि वो आपने रिस्क भी लिया ऐसी जगह लेने का। ओके, द थर्ड थिंग वुड बी कमोडिटी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आते हैं, बिकॉज कमोडिटी इज समथिंग विच कंप्लीटली वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई, it most of time beat inflation. So the third category which can be a potentially to generate a better return than FD is the commodity. Then your fixed income product comes, जो 6-7% के आसपास रहेंगे, and then savings, and last would be cash with a 0%. So it's a good idea, but ultimately I need to do the comparison. आप अगर ऑलरेडी मर्सिडीज चला रहे हैं तो आप क्यों ग्रैंड विटारा खरीदना चाहेंगे? It is that way. Yeah. Someone is asking, is it okay to start SIP in mutual fund in all-time high market, or can we start on debt first and then switch to mutual fund? You see, there is never be a all-time high market, or there always be a all-time high market, because number has to go up only. आप ऐसा देखिए कि आपने मान के चलिए आपकी सेविंग्स जो थी 10 साल पहले, आपकी सेविंग्स की वैल्यू थी 100 रुपए, मान के चलो, छोड़ देते हैं इक्विटी मार्केट। आप ऐसा समझो कि आपने एक एफडी बनाई 100 रुपए की, है ना? तो अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर 7% का ब्याज है? 107।
तो 107 बिकम ऑल टाइम हाई। उसके अगले साल क्या वैल्यू होगी? 107 का 7%, तो मे बी अराउंड 114.5। फिर 123, 133। तो ये तो हर बार ऑल टाइम हाई आ रहा है। तो सेम अप्लाई ऑन द बिजनेसेस आल्सो। इफ एनी बिजनेसेस स्टार्टेड एट 100, then naturally the profit which they are making, that will be get added in their value. तो जो हम मार्केट देखते हैं, इट्स नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज, कि उनका 50 कंपनीज का वैल्यू क्या है। अब उनका प्रॉफिट जो आया है, दैट टेक केयर ऑफ द मार्केट वैल्यूएशन। तो अल्टीमेटली मार्केट विल ऑलवेज गोइंग टू टेल यू दैट ऑल टाइम हाई। आपने कभी देखा है कि 2008 में जब मार्केट 21,000 टच किया, तो लोगों ने बोला ऑल टाइम हाई है। तो फिर तो आज भी 21,000 होना चाहिए था, और हमें तभी खरीदना चाहिए था जब वो गिरा। उसके बाद हमें 21,000 बेच देना चाहिए। सो दिस विल बिकम वेरी इजी देन इन दैट केस। लाइक एवरी टाइम आई विल बाय इट एट 55,000 के लेवल पे, और 65,000 के लेवल बेच दिया करूंगा, फिर 55,000 के लेवल पे खरीदूंगा। सो दिस इज हाउ द थिंग डज नॉट वर्क। ओके, इफ द अर्निंग्स विल कम, then naturally this 65 becomes 70, 70 will become 80. India census got started at 100 in 1979. Today it is around 63, 64,000. So imagine it's continuing to go up because the businesses are functioning, they are generating profit, and that reflecting into a value. So don't try to time the market, and there is no season to start SIP. SIP वैसे भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस महीने डालेंगे, अगले महीने डालेंगे, डालते रहेंगे, you would be getting a participation of मल्टीपल मार्केट। एंड ऐसा सेट 10 साल है, आपको लगता है कि 10 साल में मार्केट का लेवल 65,000 ही लेगा? इफ यू फील दैट मार्केट विल रिमेन 65,000 नेक्स्ट 10 years, then you should not invest in equity. But if you feel that market will be whatever the value would be, 2 लाख का लेवल हो गया, then technically you should be investing, you should not try time the short term. तो आप शॉर्ट टर्म छोड़ दीजिए, थिंक ऑफ इट little longer time horizon, build it, you will get a better result. Yeah. There's another question someone is asking is, do you guys suggest any pure stock portfolio? So we don't believe in investing in listed direct stocks because we feel that it's difficult to beat fund manager, है ना? आप डायरेक्ट स्टॉक्स लेके आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फंड मैनेजर है जिसके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, इंस्टीट्यूशन ब्रोकर है, उसका 24/7 यही काम है, और आप उसको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये वैसा हो गया कि मैंने चार, जैसे फॉर एग्जांपल साहिल ही बोले, तो साहिल लुक आफ्टर माय मार्केटिंग एंड अदर स्टफ। साहिल बोले कि कल मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, है ना, एंड आई कैन शूट फिल्म बेटर देन एनी प्रोफेशनल डायरेक्टर। So I think it's a wrong expectation from our side. Yes, he might do good. Okay, he'll do good, but cannot be better than the professional directors. So in the long term, it's very difficult to beat any fund manager's expertise and experience. That is why we try to avoid direct stock portfolio. We say even if you have to do the direct stock investment, go with the PMS route, where the minimum ticket size 50 lakh rupees. Okay. So technically, your mutual fund is solving most of the problem. Somebody asking it, you do should we invest in ULIP? Yes, of course we should invest in ULIP, but a ULIP which are low cost. Okay, because ultimately the only motivation to invest in ULIP is tax benefit. आपको रिटर्न टैक्स फ्री मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको 10% पे करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट का रिटर्न 15% है, तो म्यूचुअल फंड में हमारा 13.5 बचेगा और यूलिप में 15 बच जाएगा। बट उसके लिए ये होना चाहिए कि यूलिप का कॉस्ट और म्यूचुअल फंड का कॉस्ट सेम होना चाहिए। If the ULIP cost is 5%, then technically I lose out all the value. So ULIP is one of the great tool because generate tax free and switches are there. But ultimately, we also need to understand that it should be cost efficient. So you need to be little conscious on it. The making mistake could be higher. तो ऐसा बोला जाता है ना कि ये एक्सपेरिमेंट आप किसी के सुपरविजन में ही करिएगा। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूलिप, you get somebody a good advisor on board before you invest in that. Otherwise, it can backfire you. Yeah. Another question, I think this is the last question. Someone is asking, can Fincart give advice if I buy mutual fund directly from a provider? You can buy directly from the provider. We give in that. So that's a different service agreement need to be get done. So all the possible options we deal in there. We leave a client a choice on it, how he want to get it manage the money. As a company, we can work any of the arrangement. Should not be an issue. Yeah. So I think we are like coming to an end because it's
It's like So close to at 1 hour. last, yeah, yeah. Yeah. So at Yeah, last, I would like to add simple thing in the all individual life on this literacy day. Okay, simple three rules I would like to add in that. One, don't experiment with your money. Okay, it's a hard-earned money. Don't experiment. Take a charge of your money. Okay, make sure it should be equally working hard the way you are working it. Okay, and the third would be which you should be working on that. Okay, you should be continue to upgrade your skill so that nobody will make you fool. Like Fincart is a brand name, but our company name is Three Advisor Private Limited. When we started this company, with a simple motto, three stand for education, empower, and enable. So our logic was we want to educate so well to our client, they become empower so that nobody will cheat him. And with the platform, we want to enable them so that they can act independently. So with that wisdom, with that thought process, we started this company, and so far we have been working in that direction continuously. Every day, every year, we try to ask ourselves what we can do better, how we can improvise ourselves, and so many things which we have done last 10 years, and naturally in coming 10 year 20 years will continue to enhance the experience, the quality of advisory, and the problems which we are trying to solve. So start spending on it, take a better control of finances. As I always repeatedly I'm asking this, telling this thing, after your health, anything which can stop you in life would be your mismanagement of your wealth. As simple as that. I think we can call this stream off. So it's for the audience. Like we'll keep doing these live sessions on a regular basis. Plus, you can also subscribe to our channel because we post financial planning and basically broad. We create different content on finance. We cover all the topics, so you can subscribe because we post every week. So yeah. So, just like I just want to wish world happy World Literacy Day to everyone. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you guys.